हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। आज हम अपनी नेक्स्ट 30 एब्रीवेशंस करते हैं कंप्यूटर की। तो चलते हैं फर्स्ट एब्रीवेशन में, दैट इज़ PNP, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, these are the devices that work with the computer system as soon as they are connected. Means that the user does not have to manually install the drivers for the device or even tell the computer that a new device has been added. Next is RAM, random access memory. Random access memory is a volatile memory that temporarily stores the files you are working on. ठीक है, it just gives applications a place to store and access the data on the short term basis. Okay, then next is ROM, read only memory. Read only memory is a non volatile memory that permanently stores the instructions for your computer. Relational database management system, RDBMS, is a common type of database that stores the tables, that stores the data in tables so that it can be used in relation with other stored data sets. Okay, then is RPM. RPM is revolutions per minute. These measures the relational speed of the motor spindle. That's it. Then next is RTF, rich text format. Rich text format is an universal document file format, easily readable whether you are using Windows, Mac or Linux. No matter what the platform or the word processor is everyone can open and read these RTF files. ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल्स। लाइक जैसे हम PDF फाइल्स हमें रीड करनी है तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो हमारी PDF फाइल रीडर होगा एंड देन फिर हम उसको रीड कर सकते हैं। बट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं होता। देन इज RIF, routing information protocol. Routing information protocol is a routing protocol which is utilized by the computer and other network devices, like हम we can say एग्जाम्पल ले सकते हैं राउटर्स का। ठीक है, देन नेक्स्ट इज RSS, रियल सिंपल सिंडिकेशन, एंड RTS, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट चलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, it is the process of optimizing your online content so that a search engine likes to show it as a top result for searches of a certain keyword. ठीक है ना, ऊपर आपको दिखा देगा आपका जो भी सर्च एरिया है। ओके, SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। इट इज़ जस्ट ए स्मॉल प्लास्टिक कार्ड दैट स्लॉट्स इनटू योर फोन। ठीक है, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टोर होती हैं। ठीक है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ जस्ट द प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग द ईमेल ओवर द इंटरनेट। दैट्स इट। देन इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। It is widely used programming language which is designed for working with relational database management system to handle the structured data. ओके, स्ट्रक्चर डेटा जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ये वर्क करता है। क्यों? ताकि स्ट्रक्चर डेटा को हैंडल कर सके। ठीक है, SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एंड व्हेन डेटा इज इट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी एंड डेटा क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी। SDRAM, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, इट इज़ अ यूनिट, इट इज़ बेसिकली it is a power supply unit कह सकते हैं, we can say, and it is generally used in computers to convert the voltage into the computer acceptable range. Okay,
Then next is SMS, that is short message service. Next is SSD, solid state drive. It is a mass storage device similar to a hard disk drive. It allows reading and writing the data and maintains the stored data in a permanent state even without the power. Okay. SIU, serial interface unit. SCSI, small computer system interface, is a set of standards for physically connecting and transferring the data between computer and peripheral devices. SODIMM, small outline dual inline memory module. What is this? It is a this type of computer memory built using the integrated circuits. SATA, serial advanced technology attachment. Serial advanced technology attachment is an interface for transferring the data between a computer central circuit board and the storage devices. Okay, and SVGA is super video graphics array. ठीक है, it is just the extension of video graphics array. It provides the higher resolution with more colors, like we can say 1024 into 760 pixels. Okay, TCP, transmission control protocol, is an internet communication protocol that allows digital computers to communicate over the long distances. Then next आता है हमारा TBPS, terabytes per second, and TBPS, terabytes per second. Telnet, telecommunication network. It is a group of nodes interconnected by links that are used to exchange the messages between the nodes. TXT, text. TIFF, tagged image file format. This tagged image file format will not lose any quality or the clarity when edited or saved repeatedly. Okay, then is TAPI, telephony application programming interface. It just refers to for the telephony applications. ठीक है, इसलिए नाम भी इसका टेलीफोनी एप्लीकेशंस के लिए हम बोल सकते हैं इसको. देन इज USB, यूनिवर्सल सीरियल बस. इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट यूज टू कनेक्ट द कीबोर्ड्स, माउस, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड डिजिटल कैमरास एंड एक्सेट्रा. ठीक है, सो लेट्स डू द क्विक रिविजन. PNP, plug and play. RAM, random access memory. ROM, read only memory. RDBMS, relational database management system. RPM, revolutions per minute. RTF, rich text format. RIP, routing information protocol. RSS, real simple syndication. RTS, real time streaming. SEO, search engine optimization. SIM, subscriber identification module. SMTP, simple mail transfer protocol. SQL, structured query language. SRAM, static random access memory. SDRAM, synchronous dynamic random access memory. SMPS, switch mode power supply. SMS, short message service. SSD, solid state drive. SIU, serial interface unit. SCSI, small computer system interface. SODIMM, small outline dual inline memory module. SATA, serial advanced technology attachment. SVGA, super video graphics array. TCP, transmission control protocol. TBPS, terabits per second. TBPS, terabytes per second. Telnet, telecommunication network. TXT, text. TIFF, tagged image file format. TAPI, telephony application programming interface. And last is USB, universal serial bus. So today's
target of 30 abbreviations is completed.